हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सर्वेइंग सेकंड पार्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने प्रीवियसली भी आप लोगों को बताया था, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो क्वेश्चंस है वो थोड़े रिवाइज हो जाए। रिवीजन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, नॉट फॉर लाइक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं समझा रहा हूँ, बाकी जो है मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में अपकमिंग वीडियोस में समझाऊंगा। ठीक है, और बाकी बहुत सारे वीडियोस में ऐसे भी है मैंने समझा के रखा हूँ, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, इनके बारे में मैं डिटेल्स में समझा के रखा हूँ। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ऑप्टिकल रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कौन सा आंसर होगा इसका? The vertical circle is usually continues from 0 to 59 डिग्री। The reading increases, बिल्कुल सही। फेस लेफ्ट में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा फेस राइट में। इसका आंसर हो जाएगी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pick up the correct statement from the following. In the Earth's magnetic field, a magnetic needle rests in magnetic meridian, बिल्कुल सही। The angle between the two meridian and the magnetic meridian is called magnetic variation. On the one end of the magnetic needle supported at the center of gravity tends to dip down towards the nearer magnetic pole of the earth. And the last option is all of the above. कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, एक जो जो थिक लाइन में दिखा रहा है, जो सबसे ऊपर दिखा रहा है, उसी को हमें कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे एक रेलवे ब्रिज ऊपर जा रहा है, इसके नीचे जस्ट एक रोड जा रहा है, तो इसमें होगा ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड, नहीं बिलो रेलवे, रोड बिलो रेलवे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसकी आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, if the plane table is not horizontal in a direction at right angle to the LED, the line of sight is parallel to the fiducial edge only for the horizontal side, inclined side upward, inclined side downward, and none of this. It will be parallel only to the horizontal side. Next question is, select the correct statement. A contour is not necessarily a closed curve. A contour represents a ridge line if the concave side of lower value contour lies inside the higher value. Two contours of different elevation do not cross each other except in the case of overhanging cliff. All of the above. Yes, बिल्कुल सही। इसका जो आंसर है वो हो जाएगी आपका two contours of different elevation, they will never cross each other except in the case of overhanging cliff। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ द लाइन इज, देखिए होल सर्कल बियरिंग जो है 270 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब अब रिड्यूस बियरिंग क्या होगा? रिड्यूस बियरिंग हो गया, देखिए नॉर्थ के पास में भी है, साउथ के पास में भी है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री होगा, यहाँ से भी 90 डिग्री, सिंपल 90 डिग्री वेस्ट 90 डिग्री कहेंगे। ध्यान रखिए, जब हम लोग 270 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री, मतलब हम लोग का जब ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा और साउथ में होगा, तो पहले डायरेक्शंस आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोगों को पहले वेस्ट लगानी है, उसके बाद ही 90 डिग्री लगानी है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बाय ड्रॉइंग रीसेक्टर्स फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द नोन स्टेशन इज। लोकेशन डिटरमाइन करना, देखिए ऑलरेडी मैंने बताया था आप लोगों को, दो मेथड है, रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन, और अलग दो मेथड है, रिसेक्शन एंड ट्रैवर्सिंग। ठीक है,
ये दोनों मेथड है डिटेल्स को प्लॉट करने के लिए और ये दोनों मेथड है ओरिएंटेशन को करने के लिए। ठीक है, तो रिसेक्शन और ट्रैवर्सिंग जो है हम लोगों के, वो दोनों मेथड से क्या किया जाता है, ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल किया जाता है, और रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन जो है इससे डिटेल्स प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगी वो हो जाएगी इन दोनों में से, रिसेक्शन एंड ट्रैवर्सिंग। क्यों? रीज़न है हमें लोकेशन को फाइंड आउट करना है। ये दोनों से रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन से डिटेल्स प्लॉट किया जाता है, डिटेल्स, और इन दोनों से हम पॉइंट को प्लेस करेंगे, तो लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। सो रिसेक्शन एंड ट्रैवर्सिंग से द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय ड्राइंग रीसेक्टर्स, अगर रीसेक्टर्स करेंगे देन द मेथड विल बी टर्म्ड एज, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, रिसेक्शन। ठीक है, रीसेक्टर्स यूज़ करेंगे तो रिसेक्शन मेथड हो जाएगी। सिंपल, आपको वर्ड से ही पता लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे विच आर कैरिड आउट टू डेपिक्ट माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज, वुडन एरियाज एंड अदर कल्चरल डिटेल्स आर नोन एज, कौन सी सर्वेइंग होगा? कैडेस्ट्रल सर्वे का मतलब है हम लोग बाउंड्री लाइन को यूज़ करते हैं, सिटी में सिटी की सर्वेइंग करते हैं। सो सर्वे विच इज़ कैरिड आउट टू माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज, सब चीज़ों को लेंगे तो दैट इज टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन ऑफ revolving a plane table about its vertical axis so that all the lines on the sheet become parallel to the corresponding line on the ground, and that process is called as orientation. Revolve करने को मतलब है orientation. The number of horizontal crosswords in the stadia intercept is 3. इस तरीके से होता है। ठीक है, so it is 3. Next question is total latitude of a point is positive if it lies north of the reference parallel, south of the reference parallel, east of the reference parallel. Total latitude of the point is positive if it lies north of the reference parallel. North, ध्यान रखिए इस चीज़ को, हमेशा नॉर्थ होगा पैरेलल के लिए, पॉजिटिव के लिए। If the length of a transition curve to be introduced between a straight and a circular curve of radius 500 meter is 90 meter, the maximum deflection angle to locate its junction point is, maximum deflection angle कितना होगा? ये क्वेश्चन आए तो आप लोग को इतना आना चाहिए कि डायरेक्ट आंसर को टिक कर पाओ, इतनी, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम्स में इतना समय नहीं है। आप लोगों के पास हो सकता है नॉलेज हो, बहुत सारा नॉलेज हो कि कैसे क्या हो सकता है, डिटेल्स में नॉलेज हो, फिर भी आप लोग एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर पाओगे जब तक आप लोग कुछ हद तक रिमेंबर नहीं करोगे। क्योंकि आजकल क्या एग्ज़ाम्स जो है डिपेंड करते हैं कि कितना समय है, समय बहुत कम रहता है और आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करना है, दुगना आंसर, मतलब 1 मिनट में मान के चलिए कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन करना होगा। और अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो एक क्वेश्चन भी पॉसिबल नहीं है 1 मिनट में, इसीलिए आप लोगों को कुछ हद तक रिमेंबर करना होगा क्वेश्चंस को। द ऑप्शन विल बी हियर ऑप्शन नंबर सी, 1 degree 43 minutes and 28 seconds. Under the ordinary condition, the precision of the theodolite traverse is affected by, so it is affected by systematic linear error. Under normal condition it is affected by systematic linear errors. ठीक है, next question, the sum of the interior angles of a geometric figure laid on the surface of the art differs from that of the corresponding plane figure only to the extent of 1 second for every 200 square kilometer या 200 kilometer square of area. Next is an angle of zero deflection right may be obtained by setting the instrument to read 0 on backside, 180 degree on backside, 90 degree on backside. It can be obtained by setting the instrument जीरो ऑन बैक साइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
द बिलो पिक्चर इज द कन्वेंशनल साइन ऑफ, ये जो भी साइन है ये साइन है हम लोगों की टेम्पल के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लोकेशन ऑफ कॉन्टोर ग्रेडियंट फॉर ए हाईवे इज बेस्ट सेट आउट फ्रॉम, contour gradient for a highway is best set out from ridge down the hill, saddle down the, बिल्कुल सही, saddle down the hill। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेटिंग आउट ए कर्व बाय टू थियोलाइट मेथड इन्वॉल्व्स, फॉर द टू थियोलाइट मेथड इट इन्वॉल्व्स बोथ linear as well as angular measurements and linear measurements and none of this। देखिए थियोडलाइट ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग लीनियर मेजरमेंट नहीं ले सकते, तो उसमें हम लोग की जो आंसर है वो हो जाएगी एंगुलर मेजरमेंट्स ओनली। डायरेक्ट मेथड ऑफ कॉन्टोरिंग इज ए क्विक मेथड एडप्टेड फॉर लार्ज सर्वे, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, इट इज ए मोस्ट एक्यूरेट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है a lemniscate curve will not be transitional throughout if its deflection angle is 40 डिग्री। Bernoulli's lemniscate curve जो है that one will not be transitional throughout if its deflection angle is 45 डिग्री। If the vertical angle of inclined side do not exceed 10 degree and non-verticality of the staff remains within 1%, steady system of tachymeter observations are made on staff normal, staff vertical, staff normal as well as vertical, none of this। Staff, the answer will be, कौन सा आंसर होगा? द आंसर विल बी स्टाफ नॉर्मल। और क्या क्या है इसमें? स्टाफ वर्टिकल है, स्टाफ नॉर्मल नहीं, आंसर जो है इसका हो जाएगी स्टाफ नॉर्मल। द स्टाफ रीडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए लेवल with the bubble at its center is 1.31 meter. When the bubble is moved by 5 division out of the center, the reading is 1.39 meter. The angular observation of one division of the bubble is 41.25 seconds. On a diagonal scale, it is possible to read, आप लोगों को भी पता होगा डायगोनल स्केल में 3 रीडिंग हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मेथड यूज फॉर लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशन, लोकेटिंग के लिए हो गया हम लोगों का रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन, रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन। उसके बाद ट्रेवर्सिंग एंड रिसेक्शन, तो कौन सा होगा? विद द मेथड विच इज यूज फॉर लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशन इज, सो जैसे मैंने प्रीवियसली भी आप लोगों को बताया था कि लोकेट करने के लिए 2 मेथड यूज किया जाता है, दैट इज ट्रेवर्सिंग एंड रिसेक्शन और रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन। रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स और स्टेशन के लिए, और ये दोनों मेथड है हम लोग यूज़ करेंगे लोकेटिंग स्टेशन, लोकेशन ऑफ स्टेशन, प्लेन टेबल स्टेशन। सो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी, ट्रेवर्सिंग एंड रिसेक्शन। अब दोनों ही यूज़ किया जाता है लोकेशन ऑफ स्टेशन बाय बैक साइटिंग, बाय ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ये सब चीज़ यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिड्यूस बियरिंग ऑफ ए लाइन इज एन एंगल बियरिंग
given line and the part of the meridian with the north end or the south end lying adjacent to it. In horizontal angle, the error due to imperfect leveling of the plate bubble is so इसका आंसर कौन सा हो जाएगी? देखिए हॉरिजॉन्टल एंगल पूछ रहा है, वो एरर ज़्यादा होगा अगर स्टिपली इंक्लाइंड साइड होगा, अगर इंक्लाइंड है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ज़्यादा एरर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द चेन लाइन व्हिच रन्स अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल एंड द ग्राउंड इज ईस्ट इन वेस्टर्न डायरेक्शन इज स्लोपिंग, then it is possible to set the offsets on both the side. Next question is the second term may be neglected if the value of h in a 20-meter distance is less than whenever this one will be less than 3 meter. Next question is with the rise of temperature the sensitivity of a bubble tube टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो सेंसिटिविटी विल डिक्रीज, सेंसिटिविटी विल इंक्रीज, क्या होगा विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है दैट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बढ़ेगा टेम्परेचर कम होने से और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास हैज़ स्लाइटली द ग्रेटर रिफ्रैक्टिंग पावर देन क्राउन ग्लास, बिल्कुल सही, हैज़ रफली डबल रिफ्रैक्टिंग पावर देन। इसका आंसर जो है हो जाएगी ऑल ऑफ द अबव। The imaginary line passing through the intersection of crosshair and the optical center of the objective, that line is called as the line of collimation. Crosshair और optical center objective के दोनों से पास हो रहा है, that line is called line of collimation. During leveling, if back side is more than foreside, back side का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, it means क्या है कि पीछे की तरफ ज़्यादा डीप है, मतलब द बैक साइड इज एट लोअर पॉइंट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टैंडिंग ऑन अ रबर इज लेवल्ड इन लेवलिंग हेड और ट्राइबल, द लेवलिंग स्क्रूज आर, द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज closed contours with higher value inward, higher value inward है inside, मतलब क्या होगा, ये hill होगा, this one will represent the hillock. Next question is if the difference in height between the two ends of the chain of the length, the required slope correction is equal h square by 2l होगा, slope correction हो जाएगी h square by 2l। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन प्लेन टेबलिंग फॉर ऑब्टेनिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन डायरेक्टली विदाउट डिस्टर्बिंग टू चेन्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? विल बी यूजिंग दी टेलीस्कोपिक एलिडेट। बिना चेन यूज़ किए हुए अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस पता करना है प्लेन टेबलिंग में, हम लोग यूज़ करेंगे टेलीस्कोपिक एलिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द कंटूर लाइंस हैविंग द सेम एलिवेशन कैन नॉट यूनाइट एंड कंटिन्यू एज वन लाइन, बिल्कुल सही। A contour cannot end abruptly but must ultimately close itself, not necessarily within a limit of the moment. इसका आंसर है all of this. An imaginary line joining the points of equal elevation on the surface of the earth is called as the contour line. This line is called as the contour line. If in a closed dot the sum of the north latitude is more than that of the sum of the south, कौन सा कम है? साउथ कम है एंड द सम ऑफ द वेस्ट डिपार्चर देन द सम ऑफ द ईस्ट डिपार्चर, ईस्ट कम है तो साउथ ईस्ट हो जाएगी इसके आंसर।
जो जो कम है उन्हीं में हमें लगानी है, तो आंसर विल बी साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई by the virtual image on the object, that the ratio of those angles is called as magnification. Next question is pick up the correct statement from the following. इसका आंसर जो है वो हो जाएगी आपका all of this. Next question is to orient a plane table at a point with two inaccessible point, two inaccessible point, तो 2 point problem हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम बैक बियरिंग ऑफ द लाइन मे बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स फॉरवर्ड बियरिंग बाय बैक बियरिंग और फॉरवर्ड बियरिंग। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द कार्डिनल पॉइंट, दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग नॉर्थ फॉर साउथ एंड ईस्ट फॉर वेस्ट एंड और वेस्ट फॉर ईस्ट, वाइस वर्सा, जो भी है इस तरीके से बैक बियरिंग ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the horizontal distance between the stop point and the point of observation is d, then the error due to curvature of the arc is error will be equal to d square. d square कैसे पता है हमें? एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, error due to the curvature and refraction, that is 0.0785 d square, तो यही है d square, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू प्लस और माइनस 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज to orient a plane table at a point roughly south of the midpoint of the two inaccessible conical region, the orientation so obtained is, orientation कौन सा होगा? It will be manifold and correct. While setting a plane table at a station, it was found that the error in centering was 30 cm away from the ray of length 40 meter drawn from the station. If the scale of the plane, scale कितना है? 1 cm is equal to 2 cm. The displacement end of the ray in plane from the two position was, displacement कितना हो जाएगा? The displacement will be 0.15. The displacement will be 0.15 centimeter. 0.15 centimeter. If the theta is the slope of the ground and L is the measured distance, the correction is, अगर स्लोप दिया के रखा है करेक्शन 2L into the sin square theta, the answer will be 2L sin square theta. Next है the type of surveying which require least office work. प्लेन टेबल सर्विंग सबसे कम वर्क होता है इसमें, क्यों? क्योंकि फील्ड में ही हम लोग पूरा प्लेन टेबल के ऊपर शार्ट पेपर को डाल के पूरा डिटेलिंग प्लॉट कर देते हैं, ग्राउंड मतलब ग्राउंड में ही इटसेल्फ। द मेन प्लेट ऑफ ए ट्रांजिट इज डिवाइडेड इनटू 1080 डिवीजन, 60 डिवीजन ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड एग्जैक्टली विद 59 डिवीजंस ऑफ द मेन प्लेन। द ट्रांजिट एंगल से सेकेंडरी एक्यूरेसी अप टू 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आंसर विल बी 2 times of the cos of delta by 2, the answer। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ इनटू द sec theta minus of 1, करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए क्लोज ट्रेवर द omitted measurements may be calculated length of one side only, bearing of one side, both length and bearing of one side, all of this. Next question is horizontal distance obtained by thermometric observations, required slope correction, required slope, and they do not require any kind of slope and tension corrections. A clinometer is used for defining natural feature, setting out right angle correction line, or measuring the angle of slope. The clinometer is used for measuring the angle of slope. उसके बाद नेक्स्ट इज डिस्टेंस के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, सो L1 by the L into S,
ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज इन ए परफेक्ट प्रिज्मेटिक कंपास. हर एक चीज होगा, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. बिल्कुल सही. जो लिखा है क्रॉस स्टार राइट एंगल के लिए जियोडीमीटर इट इज नॉट सेटिंग एनी. सेटिंग करने के लिए एनी ग्रेडियंट में सेट कर सकते हैं. बॉक्स सेक्शन इज फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल. बिल्कुल सही. सो ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दिस. सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब इज डेजिग्नेटेड बाय. किससे डेजिग्नेट किया जाता है? इट इज डेजिग्नेटेड बाय द रेडियस ऑफ द लेवल ट्यूब. नेक्स्ट है दिस इज द फॉर्मूला. इन दिस फॉर्मूला minus sign is used for angle of depression, plus sign is used for minus sign is used for angle of depression. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीडेंटल और कॉम्पेंसेटिंग एरर ऑफ लैंड आर प्रोपोर्शनल टू द रूट एयर. नेक्स्ट इज और क्यूमुलेटिव एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. The latitude of a transverse leg is obtained by multiplying its length by. इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें इसको फाइंड आउट करना है लेटीट्यूड को. The latitude is obtained by multiplying its length by the cosine of its reduced bearing. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डी इज द डिग्री ऑफ द कर्व ऑफ रेडियस आर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ इच स्पेसिफाइड कॉर्ड इज. क्या होगी एग्जैक्ट लेंथ ऑफ इच स्पेसिफाइड कॉर्ड? द एग्जैक्ट लेंथ इज स्पेसिफाइड कॉर्ड विल बी डायमीटर ऑफ द कर्व इनटू द साइन ऑफ द हाफ ऑफ द डिग्री. नेक्स्ट इज बेंचमार्क इज obtained बाय स्पिरिट लेवलिंग होगा. Next is if a tachometer is fitted with an analytic lens. जैसे हमें पता है d इज इक्वल टू के एस प्लस सी. ये हो जाएगी 100 और ये हो जाएगी 0. नहीं सॉरी, ये हो जाती है 100 और ये हो जाती है 0. सो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज 100 एंड एडिटिव कांस्टेंट इज 0. सो ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट ऑफसेट्स आर मेजर्ड विद. शॉर्ट ऑफसेट जो कि है हम लोग किससे मेजर करेंगे? बाय एन इन्वर्टेड स्टील मेटल के ऑर्डिनरी चेन. बाय द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी चेन. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल टोपोग्राफी ऑफ ए वेरी फ्लैट टेरेन इज पॉसिबल ओनली. फ्लैट टेरेन के लिए इट इज पॉसिबल ओनली बाय गिविंग स्पॉट लेवल्स टू सेलिएंट फीचर्स एट क्लोज इंटरवल्स. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेरिडियंस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस they converge from the equator to the pole. They always converges from the equator towards the poles. Next is the angle between the prolongation of the preceding line and the forward line of a traverse is called. दोनों लाइन का एंगल का हम लोग क्या कहेंगे? That angle will be termed as deflection angle delta. This one will be AB divided by the cot B minus of cot A. In case of a direct vernier scale, direct vernier में graduation increases in the same direction in graduations of the main scale. Direct vernier में क्या होगा? graduations increases in the same directions as that of the main scale increases. The operation of making the algebraic sum of latitude and a departure of a closed table each equal to 0 is called balancing the side, balancing the balancing and balancing the traverse. This one is called as balancing the traverse. Next question is dumpy level is most suitable when many readings are to be taken from the single setting of the instrument. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट एनी पॉइंट.
it remains constant. It does not remain constant. Magnetic declination at any point, it does not remain constant. Next question is the length of the chain imam. This one will be 2L into the cos square theta by 2, 2L square into the sin square theta by 2. So this one will be 2L sin square theta by 2, 2L sin square theta by 2. The combined effect of curvature and reflection 0.0785 minus of 0.0112. इससे वैल्यू आएगा 67.3. The answer will be 67.2 minus. Next question is the systematic error which persists and have regular effect in the performance of the survey operation are due to. These are due to the faulty instruments. Next question is the instrument used for accurate centering in plane table. Centering किया जाता है plane table में plumbing fork से. Next question is half of the contour interval, accuracy of elevation. Next question is curvature of the arch surface is taken into account whenever the survey is more than 260 km square. Next, the theodolite used for making tachymeter by optical wedging system is there is a fitted a wedge glass in front of the telescope. Next question is when the bubble of the level tube of a level remains central होगा तो line of sight is horizontal. Then the line of sight will be horizontal. Next है an imaginary line. That imaginary line is termed as the contour gradient. Accurate measurement of deflection angle with a transit not properly adjusted may be made by. किस तरीके से बनाया जाता है? It can be made by taking the two backside, one with the telescope normal and other with the telescope inverted. Next question is the answer will be all of this. Next question is the reduced level of a floor is 99.995. स्टाफ रीडिंग दे के रखा है, इन्वर्टेड स्टाफ के भी दे के रखा है. देन द फ्लोर लेवल बिलो द स्लैब, इसका लेवल क्या हो जाएगी? द फ्लोर लेवल बिलो द स्लैब विल बी 3.300. Next is probable systematic error in precise leveling as recommended by the International Geology is root over. This one is equal to the plus minus of what? This one is equal to the answer will be 0.2 root of k mm. The resection by 2-point problem as compared to the 3-point problems, it requires more labor. The coordinate of a point measured perpendicular to the parallel is called. This one is called as the total latitude. Next question is the bearing of C from A is north 30 degree east and from B 50 meter east of A is north 60 degree west. The departure of C from A is 25 meter. Next question है हम लोगों की if H1 and H2 are the differences in level between ground and the formation level, M is the slope of the prismatic correction. तो इसका फॉर्मूला जो है H1 minus of H2 whole square into the D by 6M, ये वाले फॉर्मूला हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इसका आंसर जो है वो हो जाएगी द आईपीस प्लेज नो पार्ट इन डिफाइनिंग द लाइन ऑफ साइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुटेबल कंटूर इंटरवल फॉर ए मैप विद स्केल 1:10,000 इज. सुटेबल कंटूर इंटरवल कितना हो जाएगी? इसकी कंटूर इंटरवल है जो 2 मीटर हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एडजस्टमेंट लेवल व्हेन द बबल इज सेंट्रल द एक्सिस ऑफ द बबल टिप बिकम्स पैरेलल टू द adjusted level. The axis of the bubble tube becomes parallel to the, so answer will be line of sight. It will be parallel to line of sight. Next question, ranging is an operation of
establishing the intermediate points between the terminals, locating the position of a plane table station with reference to the 3 points is known as 3 point problem. ठीक है, उसके बाद इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. ठीक है, फोकल लेंथ है. ठीक है, if the intercept of a vertical on a vertical star is observed 0.7 meter from a tachyometer, the horizontal distance between the tachyometer and the staff is, what will be the horizontal distance will be 75 meter. ठीक है, एंड सिम्पसन्स रूल के हिसाब से हमेशा याद रखिए 2 times of odd and 4 times of even. So answer will be 1/3 of the sum of the extreme to twice the 2 times of the odd and 4 times the even. Answer number B. ठीक है, the ratio of the distances at which a stated land can be distinguished by the telescope and the human respectively is called as, distances के ratio है, the ratio of the distances at which the stated land can be distinguished by the telescope of the human eye. The ratio of the distances is called as the resolving power of the telescope. ठीक है, उसके बाद the radius of the simpler curve is 300 meter and the length of specified curve 30 meter. The degree of the curve is, what is the degree of the curve? It will be 5.73 degree. ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही था. टोटल 100 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिया. तो आप लोगों को किसी भी तरह ये सारे क्वेश्चंस याद करना है. ठीक है, अगर आप लोगों को एग्जाम्स क्रैक करना हो तो. ठीक है, सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ like the videos and subscribe my channel if you have not subscribed yet, and thanks for watching the video.